Hello, students. Jai Hind. How are you all? I hope you are doing well. Students, today we are going to study, going to learn a new chapter and a very interesting chapter that is basically a story from water to money. Students, from starting this chapter, I want to clear this point that the money you see in your father's purse, in your mother's purse, or in your purse, it can be in the form of paper, it can be in the form of coin. Now, a new type of money had been introduced in the market like digital money. This system exists currently. What kind of system were in the existence in the earlier time? At that time, did QR code, ATM cards, credit cards, and paper money and coins were in the existence? So the answer is very clear that there were no existence of this type of. So the question rises now, which kind of money were in the existence and how markets flows, how markets were in the continuous process. Basically, in this chapter, we are going to learn about this story that which kind of system were running at the time and how the system of money introduced in the market and it changed its form. So let's begin the chapter. Students, initially, people usually exchange goods or services to meet their demands. Like this system is not known as barter system. Barter system means basically a method of trade in which goods or services are exchanged directly for other goods or services without using money. And it was the earliest form of exchange. यानी कि सबसे पहले barter system ही था. Example क्या हुआ? Like if a farmer gives wheat to a tailor in exchange for clothes, it's a barter. Like suppose there were no coins, no money in the existence, so people used to sell one thing to purchase another thing. Like मुझे अगर कपड़ों की जरूरत है तो मैं टेलर के पास जाऊंगा और टेलर से कहूंगा कि आपको अगर गेहूं की जरूरत है, यदि मैं किसान हूं तो मैं उसके पास जाऊंगा और बोलूंगा मैं आपको गेहूं देता हूं और आप उसके बदले मुझे कपड़े दीजिए। यानी कि मैं आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ, आप मेरी ज़रूरतों को पूरा करें। इट इज़ नोन एज़ बार्टर सिस्टम। यानी कि एक सामान के बदले हम दूसरा सामान लेंगे तो ये बार्टर सिस्टम कहलाता है। इसमें मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नाउ इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इसमें ये प्रॉब्लम थी, अगर मैं अपना गेहूँ टेलर के पास लेके जा रहा हूँ ताकि मैं अपने कपड़े खरीद सकूँ, तो मेरी डिमांड तो ठीक है, पर क्या इस बात की श्योरिटी है कि वो जो टेलर है उसे गेहूँ की ज़रूरत ही हो सकता है उसे फलों की ज़रूरत हो, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो जो कि हमारे पास ना हो। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में वी विल नॉट एबल टू गेट क्लॉथ्स। तो वाटर सिस्टम में यही सबसे बड़ी जो इसका ड्रॉबैक था, दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक कि इसमें जो वांट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं। और इसी टर्म को वी नो एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ मींस इन द वाटर सिस्टम ट्रेड कैन ओनली हैपन। ट्रेड तभी हो सकता है व्हेन बोथ पीपल वांट व्हाट अदर पर्सन हैज। यानी हमें भी या आपको भी उसी चीज की जरूरत है जो मेरे पास है और मुझे उस चीज की जरूरत है जो आपके पास है। व्हाट यू हैव, दिस इज नोन एज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। फॉर एग्जांपल यू कैन सी अनदर एग्जांपल, इफ राम हैज व्हीट एंड वांट शूज। अगर राम के पास गेहूं है और उसे जूतों की जरूरत है, और एंड श्याम हैज शूज एंड वांट्स व्हीट, और श्याम के पास जूते हैं। फर्स्ट कंडीशन में राम के पास गेहूं है पर जूते चाहता है, श्याम के पास जूते हैं और वो गेहूं को चाहता है, तो वो इजिली दे कैन एक्सचेंज। This condition is known as double coincidence of wants because both wants what the other has. पर प्रॉब्लम क्या है? तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड सच पीपल एवरी टाइम। तो ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत बड़ा टास्क होता है। कभी कभी कुछ चीजें हमें जल्दी चाहिए रहती हैं,
तो इन चीज़ों को ढूँढना इट वाज़ रियली अ डिफिकल्ट टास्क, आज के टाइम में भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। दैट्स व्हाई मनी वाज़ इंट्रोड्यूस्ड टू मेक बाइंग एंड सेल ईज़ियर। इसलिए मनी एक ऐसा कॉमन फॉर्म निकल के आता है एक्सचेंज का कि जिससे कोई भी चीज़ हम आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी नीड मनी? तो वी नीड मनी बिकॉज़ इट मेक्स बाइंग एंड सेलिंग ईज़ियर देन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में सामने वाले को जो चीज़ चाहिए, तो वो हमारे पास है या नहीं, इस चीज़ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। पर मनी में ऐसा कुछ, मनी इट इज़ अ लाइक कॉमन फॉर्म मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी, वी कैन यूज़ मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ अ कॉमन वैल्यू है, एवरीवन एग्रीज ऑन द वैल्यू ऑफ मनी। इट इज़ ईजी टू कैरी एंड स्टोर। मनी को हम कितने भी किलोमीटर दूर तक ले जा सकते हैं। अब मैं अब मेरे पास कोई सामान होगा लाइक वीट है या शूज़ है, मैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी नहीं कर सकता हूँ। इट सॉल्व्स वाटर प्रॉब्लम्स, और जो भी वाटर सिस्टम में प्रॉब्लम थी, मनी सॉल्व इट। एंड नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी। The in the initial stage, the continuous, yeah, it can be said that the journey of coins has been started. uh, in the ancient time, first coins were made around 7th century BC in the place like Lydia. It is currently in Turkey, made of gold and silver, shaped roughly and used for trading goods. Basically coins and any kind of money used for trading goods. In the perspective, in the context of India, India started coin making during the Mahajanpada period, means 6th century BC. Early Indian coins were called punch mark coins. It means symbols were punched on metal pieces. Initially, it was made of silver, then copper and gold or their alloys, which was basically known as Karsapan. And now coins during kingdoms and empires, various various empires issued their coins like Mauryas, Guptas, Mughals, and pictures of religious symbols depicted on the coins. British India coins also were in the continuous form. They also minted their coins. Modern coins, if we talk about, after 1947, India started making its own coins. Coins so symbol like Ashoka loin, numbers in Hindi and English, made of nickel, stainless steel, aluminum, instead of gold, silver, copper alloys. Students, another form of money has been evolved like paper money after coinage. Paper money means currency notes made of paper issued by government or central bank like RBI. It is used to buy goods and service just like on coins, but easier to carry and used in large amounts. Coin का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि लार्ज अमाउंट में यूज नहीं हो सकता है। लाइक आप देख सकते हैं कि इफ यू नीड 100 रुपीज एंड इफ यू हैव कॉइन ऑफ 1 रुपीज, तो यू हैव टू कैरी 100 coins, each value of 1 rupees. So now if we want 100 rupees, so we can carry single note of 100 rupee, है ना? तो it is easy to carry and can be used in large amount. So now this is the history of paper money. Paper money was first used in China around 7th century CE, and it spread to another countries. And in India, the British started printing papers note in 18th century. And after independence, the Reserve Bank of India, basically RBI, started issuing Indian currency. Uh, Currently, the different denominations like 10 rupees note, 50 rupee note, 100, 500, 2000 note are in continuous process. Now it has various security features like it has watermark, security thread, RBI, governor signature, Mahatma Gandhi's image, and each note is a legal tender and it is officially accepted for payment. This is the picture showing that the story of paper money from 1947 to 2022. New form of money. Basically, it is the advanced form of money. First, initially, we started barter system to fulfill our demands. Then yeah, we moved on coinage. Then the next form we developed like paper money. Now we developed another advanced form of money. Basically, that is known as plastic money like debit and credit card. We can swipe the card in the machine and pay. Digital money we are using like Paytm, PhonePe, Bhim UPI, Google Pay, and various platform. Internet banking we are using mobile wallets, and advanced form of money we can see it emerged in the some last from the some last time, like it is known as very digital form of money.
for not for children to use and not issued by any bank. Basically, it can be said that it cannot, yeah, it is not legally accepted by any official banks, that is cryptocurrency. But new form of money evolved like QR code, plastic money, internet banking, and mobile wallets, etc. So this is the summary of the whole chapter. Students, in this chapter we have learned about the story from barter money, barter system to new form of money. This was the summary. I hope you will understand this chapter better. Thank you so much. Thank you so much.